students. Our next topic is establishment of provincial government by Subhash Chandra Bose. Okay. So, Subhash Chandra Bose, we have earlier studied that Subhash Chandra Bose also established a parallel government, and he also became a prime minister and head of a army. Okay. He allotted other department to his companion and formed a cabinet. Today we also say the cabinet means in which one prime minister and another important ministry which is given by the important minister, and the government can run smoothly. So, this government is recognized by Japan, Germany, Italy, China and Burma. Language was national language was Hindi and tricolor national flag. Okay. And their income came from assisting Japan, independent role by property tax, and Netaji also visited Andaman and Nicobar Island, and they gave Andaman to Shahid and Nicobar to Swaraj name. Okay. Last step and martyrdom of Subhash Babu. In 1944, under the leadership of Netaji, his military unit captured Rangoon from Kohima. Okay, today presently a part of Nagaland. Then it marched towards Imphal, okay, capital of today's capital of Manipur. But after dropping of 2 atom bombs at Nagasaki, Hiroshima in Japan, the financial help by the government was stopped. British aircraft started warfare against Azad Hind Fauj, and so condition become very critical and worse. In August 1945, he started from Taipei airport Formosa for Tokyo, but his plane caught fire and he gets serious burns, and while undergoing treatment he died. The mystery of his death has remained unsolved till date. जो उसकी mystery है डेथ के पीछे वो आज भी अनसोल्ड है. Achieving independence and partition of India. The commander of Indian National Army were arrested as prisoners of war and were accused of treason and put on a trial. Okay. Bhulabhai Desai and Jawaharlal Nehru pleaded their case. Okay. Indian National Army के जो कमांडर थे, okay, उसको जेल में एज अ प्रिजनर उसको रखा था, और उसका जो केस है उस भूलाभाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू ने उसका केस लिया था. द ब्रिटिश गवर्नमेंट inflicted them with punishment. There were protests against them in the entire country. Okay, so because he was a very important national leader. Okay, so bowing to populist opinion, the government had to withdraw the punishment. Punishment withdraw कर ली. These events, and with the naval mutiny of Bombay, the British realized their rule in India will no longer be tenable. After this so punitive rule, British government know that British realized that their rule will no longer be tenable. On February 20, 1947, Attlee, the Prime Minister means Clement Attlee, which is the Prime Minister from the Labour side. Okay, and they announced that the British government shall give all the powers to the government of India as per the cabinet mission formula. Okay, cabinet mission formula as per the Indian government taken power from the Britisher by a cabinet mission formula, and British government also quit India by June 1948. In a changed situation, Mountbatten was appointed a viceroy in place of Lord Wavell. Okay, but this Mountbatten is a very fast as compared to
the Lord Wavell, and they the last deadline was June 1948, but their plan is to give India freedom in 1947, and means before December 1947, end of the 1947, they made a plan to give India full freedom. When he took charge to his post, communal revolts had started in India. The condition of India had become very pathetic, very worse. 1946, Congress secured 201 seats out of 210, and Muslim League was getting a 70 out of 78 seats. They get 73 seats, and then and after Muhammad Ali Jinnah become very furious, and they only demanded that हमको क्या चाहिए पाकिस्तान और कुछ बात नहीं है. The league pressurized the government for Pakistan on 16th August 1946. So terrible communal revolts and tumult spread all over India because Jinnah was demanded for a separate Pakistan. Looking at the situation in India, Sardar Patel, Nehru and other Congress felt that there was no other accepting the demand of Muslim League for Pakistan, because Muslim League getting 70 out of 78, 73 seats. Okay, Muslim League boycotted the cabinet meeting on December 9, 1946, and the Muslim executive held on January 31, 1947 decided to boycott all the meeting and gave a rapid and extensive program for the demand of Pakistan. Mountbatten convinced Nehru and Sardar Patel, who understood the matter, that having a well organized central government, having administrative unit under the center, become more powerful and peaceful and also progressive for the central government. Okay. National leaders found this argument acceptable. Okay. Then after all that, knowing that there is no other option accepting the acceptance of Pakistan, Sardar Patel and Nehru discussed his matter with Gandhiji, who also helplessly accepted. Okay, Gandhiji was not in favor for the separation of Pakistan, but after the discussing with Nehru and Patel, they know that there is no other option to accept the separate Pakistan demand. Okay. Mountbatten Plan 1947 and partition of India. 24 March 1947, Mountbatten presented its scheme. According to them, there was no alternative option other than the partition of India. Okay, partition के सिवाय कोई second option हमारे पास है नहीं. Okay, national and prolific leaders like Patel understood the matter. Okay, Sardar Patel understood the matter very well. After many discussions and pondering, finally on June 3, 1947, Viceroy Mountbatten decided to plan the partition of India. On June 3, 1947, what Mountbatten decided to plan partition of India. This plan is known as Mountbatten Plan. The Congress leader and Muslim League accepted this plan. Both Congress leader and Muslim League accepted this plan. When Mountbatten Plan started getting implemented, the people of East Bengal and Sylhet provinces of Assam decided to join East Pakistan. Today is known as Bangladesh. West Bengal and East Bengal were affiliated with India as per decision of their assembly. Means there is no foundation of any particular provinces. Means whatever provinces, whatever their demand is, means suppose कोई प्रोविंस है उसको इंडिया में ज्वाइन होना है तो इंडिया में हो सकता है, पाकिस्तान में होना है तो पाकिस्तान में हो सकता है. It was decided to affiliate north west provinces Sindh and Baluchistan with Pakistan. जो ये तीन provinces है, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट, उसको पाकिस्तान में इंक्लूड किया गया. नेक्स्ट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जुलाई 1947. एज पर दिस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग
July 1947. According to this act, British Parliament passed Indian Independence Act, and officially they propound that from today India and Pakistan was separate, and India and Pakistan also is a different country from today. Okay, according to the source, India's first Governor General was Mountbatten. India's first Governor General was Mountbatten, and Muhammad Ali Jinnah was the Governor General of Pakistan. By this act, India's dependence on British will come to an end. Okay, that's why they gave name as the Independence Act, and therefore Gandhiji considered this act as the one and only the best and beneficial act given by Britisher to India. एक गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा एक्ट है जो ब्रिटिशर ने इंडिया को दिया है, जो इंडिया के बेनिफिट के लिए हो. The last viceroy of British government organized a function in New Delhi at the midnight of August 14. Okay, 14 August midnight में लास्ट ब्रिटिश गवर्नर मीन्स माउंटबेटन ने एक फंक्शन रखा था न्यू दिल्ली में. द यूनियन जैक ऑफ इंग्लैंड वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द पोल एंड द इंडियन नेशनल फ्लैग ट्राई कलर वॉज होइस्टेड. इंग्लैंड का जो फ्लैग है उसको नीचे उतार लिया, इंडिया के फ्लैग को होइस्ट किया. तो जो भी डॉक्यूमेंट है इंडिपेंडेंस के वो माउंटबेटन ने सी राजगोपालाचारी को दिए, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के. ओके, ऐसा पूछे कि इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो आंसर है माउंटबेटन. इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो उसका आंसर है सी राजगोपालाचारी. ओके, एंटायर एटमॉस्फेयर वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट. ओके, क्योंकि आज़ादी मिली थी. एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर वॉज कंप्लीटेड. ओके, August 15, 1947 was an excellent dawn for India. All celebrated the first independent festival very pleasantly. सभी है वो चीयरफुली प्लीजेंटली सेलिब्रेट कर रहे थे. सभी जगह पे तोरण है वो गुड ओमेन बोल रहे थे, डोर पे स्वीट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, स्कूल कई सारे पैलेस पे. ओके, और सभी लोग ऐसा फील कर रहे थे कि आज जो कई सालों से मूवमेंट चल रही थी उसका ड्रीम है वो आज कंप्लीट हुआ. इंडिया बिकमिंग इंडिपेंडेंट इन द इमीडिएट प्रॉब्लम. व्हाट वाज द इमीडिएट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस? सो India and Pakistan, two separate and independent nations, came to existence after the Mountbatten Plan. You have to remember. But Indian Independence Act 1947, this resolution has found a new problem. One is a reorganization of military force in India. को सबसे पहले अपनी military force बनानी है. Second, dispute over assets and property, कितनी पाकिस्तान को मिलेगी, कितनी इंडिया को, वो डेप्थ एंड क्रेडिट, जो भी डेप्थ उधार है, क्रेडिट कितनी है वो. फोर, प्रॉब्लम एंड सेटलमेंट्स ऑफ रेफ्यूजी, जो रेफ्यूजी है इंडिया पाकिस्तान बोथ साइड्स, उसका सेटलमेंट. लास्ट, पब्लिक सर्विसेज एंड अरेंजमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. ओके, सिविल सर्वेंट कितने हो गए, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस क्या होगी, स्टाफ क्या होगा वो. डिमार्केशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया टू बी फिक्स्ड. ओके, तो इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री है. ओके, दोनों को ये जो फिक्स है उसको फिक्स करना है. 5 मेंबर कमेटी बैठती है जिसमें से 2 रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के साइड, 2 पाकिस्तान के साइड, और अंडर द चेयरमैन ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन. ओके, एक कमेटी होती है जो जिसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की साइड से, 2 पाकिस्तान के साइड से, और एक है वो गवर्नर जनरल माउंटबेटन बैठते हैं. ओके, कमेटी है वो. This committee appointed different commissions consisting of expert of relevant subject to solve all the problems. सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी एक्सपर्ट वहाँ पे बैठे थे. और कोई भी ओपिनियन में डिफरेंस होता है तो बोथ द नेशन है वो जो फाइनल डिसीजन आर्बिट्रेटर मीन्स वोट, और माउंटबेटन जो डिसीजन देता है उसको फाइनल रखना होता है. consisting of 1 representative of India and 1 Pakistan under the chairmanship of former Chief Justice of India. Military Commandant General of India complied the partition of army, military weapon, etc. जो भी इंडिया के कमांडर जनरल है उसको जो आर्मी का मिलिट्री वेपन है उसका भी सब पार्टीशन हिसाब से करके देना होगा.
ब्रिटिश आर्मी इंडिया को लेफ्ट मीन्स की छोड़ के गई February 28, 1948 को सभी थिंग्स को सॉर्ट आउट करने के बाद। ओके, डेडलाइन वाज जून 1948, बट बिफोर February 28 they sort out all the problem and leave India। एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, जुडिशरी सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि अगर उसको इंडिया में सर्व करना है या पाकिस्तान में, उसको एश्योरेंस भी दिया गया अपनी पे, अलाउंस, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, पोजीशन और पेंशन के बारे में। मैंने पहले ही बोला था कि जिस किसी को भी जहाँ पे भी जाना है वो वहाँ पे जा सकता है, इधर इंडिया और पाकिस्तान। देयर इज नो पर्टिकुलर बाउंडेशन ऑन एनी पर्सन। ओके, लार्ज नंबर ऑफ रेफ्यूजी जो इंडिया से पाकिस्तान के और कई सारे वो पाकिस्तान से इंडिया में भी आए। ओके, और इंडिया को उसका मोस्ट ऑफ और फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम था रिहेबिलिटेशन और रिस्टोरेशन, और उसको सॉल्व करना था स्किलफुली एंड पेशेंटली। देन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया को इंडियन यूनियन में ज्वाइन किया, और 562 सभी लोगों को इंडिया में वो ज्वाइन करते हैं। ओके, दैट्स वाई द जीना गेव अ स्टेटमेंट दैट अगर सरदार वल्लभ भाई है वो पाकिस्तान में होते, पाकिस्तान के होते, तो जो आज इंडिया का मैप है वो पूरा पाकिस्तान का होता। ये लाइन बोली थी मोहम्मद अली जीना, जो कि पाकिस्तान के पीएम थे उस टाइम, गवर्नर जनरल थे। येट लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम लाइक इफेक्ट ऑफ कम्युनल रिवॉर्ड्स ड्यू टू पार्टीशन। ओके, जो पार्टीशन हुआ इससे महात्मा गांधी को बहुत ही शौक लगा, उसकी डेथ हो जाती है, जिससे इंडिया है वो इंडिपेंडेंट होता है, सेल्फ रिलायंट होता है विद गुड गवर्नेंस। But India have to focus on Indian agriculture, which was very weak at that time. Okay, create a peaceful and atmosphere and tranquility of country, the internal external security of the country, etc. become very necessary. India's problem today is Indian agriculture, internal external security. Okay, so this is the end of our video, and this is also the end of our chapter number 5. I hope it is very clear to you all.